सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम्। अद्यतनः अस्माकम् अद्यतनविषयः अस्ति अन्तिमाभ्यासः, अभ्यासः 30 पृष्ठक्रमाङ्कः 60 पृष्ठक्रमाङ्कः 30, पृष्ठक्रमाङ्कः 60, अभ्यासक्रमाङ्कः 30 अन्तिमः। प्रथमः पठामि संज्ञाशब्दाः। पुनः वयं पश्यामः प्रत्ययानि, प्रत्ययौ, पुनः सन्धिः, पुनः अभ्यासः। संज्ञाशब्दाः सर्वे अद्यतनः सर्वे शब्दाः संज्ञाशब्दाः सन्ति। देयर इज ओनली नाउन्स। क्रियाशब्दाः नास्ति, धातुशब्दाः नास्ति, धातवः नास्ति, क्रियाविशेषणाः नास्ति। यानं सवारी, जैसे वाहन, लाइक vehicle, not any vehicle. संस्करणं, पुस्तकादि का संस्करण, to improve or to refine, correct. सफाई, to clean. पुनः फलानि, आम्रम, आम, मैंगो, दाडिमम, अनार, पोमग्रेनेट, द्राक्षाफलम, अंगूर, ग्रेप्स, बदरी फलम, बेर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तमिल इट इज बेरिका, बेरीज, ओके, बेरीज। कदली फलम, केला, बनाना, जम्बू फलम, जामुन, बिल्वा फलम, बेल is the fruit of that bilva tree that we'll put for Bhagavan Shiva. कंचुकः, कुर्ता, उत्तरीयः, चादर, बेडशीट, कंबलः, कंबल, ब्लैंकेट, पादयामः, पायजामा, आभूषणं, गहना, ज्वेलरी, अधोवस्त्रं, धोती, वेष्टि, whatever. अंगप्रोक्षणम, अंगोछा, this is like towel, but small towel that people wear around. मुखप्रोक्षणम, रूमाल, handkerchief. शाटिका, साड़ी, शय्या, बिस्तर, this is bed, बिस्तर. उपानः is जूता, चप्पल, slippers, sandals, whatever. व्याकरण, पंचन से दर्शन, प्रथमः पंचन से दर्शन तक के पूरे रूप स्मरण करो. सो दिस इज शब्द संख्या षट्चतुर्विंशतिः, षट्चत्वारिंशत् इज 46, एक 50, 51. 51 is missing. No, it is there. Yeah, look, it's not there. End of page number 78. No? पृष्ठक्रमाङ्कः 78, पेज 78.
पठामि पंचन पंचशब्द सर्वे पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग सर्वे एकः अस्ति समानः अस्ति समानम् अस्ति पंच पंच पंचभिः पंचभ्यः पंचभ्यः पंचानां पंचसु तो सप्तसु पंचसु पंचसु पुस्तकानि पंचसु पंचभ्यः पुस्तकानि पंचसु पुस्तकानि whatever. For example, we just have to add karana there, subject object, इसके द्वारा, इसके साथ और इसके लिए, चतुर्थी पंचमी इससे, from this, षष्ठी इसका इसकी, of this, and सप्तमी is in पंचसु इसमें. षट् 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 षड्भिः षड्भ्यः षड्भ्यः षण्णां षट्सु 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 पुस्तकानि ज्ञानम् अस्ति. In 6 books there is ज्ञान. षट्सु पुस्तकानि. तस्य पुस्तकानां पुस्तकासु षट्सु पुस्तकासु ज्ञानम् अस्ति. अथवा षट् पुस्तकानि सन्ति. There are 6 pustakas इति अर्थ. सप्त 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 सप्तभिः सप्तभ्यः सप्तभ्यः सप्तानां सप्तसु. अष्ट 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 हाँ अष्ट शब्द द्वे रूपे स्तः. अष्ट अष्टौ अष्ट अष्टौ अष्टभिः अष्टाभिः अष्टभ्यः अष्टाभ्यः अष्टभ्यः अष्टाभ्यः अष्टानाम् अष्टानाम् अष्टसु अष्टासु द्वे रूपे स्तः. अभ्यासे अभ्यासे अस्ति अग्रे. नवन शब्द प्रथमा नव, द्वितीया नवभिः नवभ्यः नवानां नवसु. दिस इज ऑल वेरी इजी. दश शब्द दशभिः दशभ्यः दशानां दशसु. दश गृहाणि अत्र सन्ति. दश बालकाः सन्ति. सर्वे बहुवचने अस्ति. अस्तु. पेज 60 षष्ठी. आम्रादि नपुंसकलिंग होंगे तो इनका अर्थ आम आदि फल होगा. सो आम्रम, केलम कदलीफलं, जम्बूफलं, द्राक्षाफलं नपुंसकलिंग अस्ति. तो इट डिनोट्स ओनली द फ्रूट, फल. अगर हाँ पुल्लिंग आम्रः दाडिमः आदि का अर्थ आम आदि का वृक्ष होगा. सो मैंगो ट्री आम, दैट इज आमः आम्रः. कदलीफल वृक्ष कदली फलः, इट विल बी कदली फलः. दैट विल बी द बनाना ट्री. ऐसे. अस्तु. प्रत्यय वयं पश्यामः. प्रथमा प्रत्यय नियम 78. तो फर्स्ट नियम हसि च लीव इट, आफ्टर वी विल कम. सेकेंड नियम एततो सुलोभः एटसेट्रा वी विल लीव इट, आफ्टर वी विल कम. प्रथमा प्रत्यय. नियमः अष्टसप्ततिः. चाहिए अर्थ में धातु का साथ तव्य प्रत्यय लगता है. धातु का गुण, धातु को गुण होता है. जैसे कृ प्लस तव्य कर्तव्यम, करना चाहिए. यू हैव टू डू, दिस इज टू बी डन. इसी प्रकार हर्तव्यम, पठितव्यम, लेखितव्यम, गंतव्यम, हसितव्यम, वक्तव्यम. कोपी जानाति वा उपनिषदि, उपनिषत्सु तव्य प्रत्यय कुत्र अस्ति? कर्तव्यम, तव्यम, हाँ वक्तव्यम, बट वेयर? We'll come back tomorrow after we do a revision. So today we are doing the last one, tomorrow a revision, and then Swamiji has suggested that we all do some homework. So I will find some Upanishad and Bhagavad Gita sentences
And then we'll see which pratyaya is used. So I will suggest one Upanishad Vakya tomorrow for Tavya Pratyaya also. And then it's very famous, Brihadaranyaka. This one. Niyama Nava Ekona Ashtati. Ekona Sati. 79. Ekona Shiti. 79. नियम 79. चाहिए अर्थ में धातु के साथ अनीय प्रत्यय भी लगता है. सो तव्य प्रत्यय कर्तव्यम वक्तव्यम इतिवत्. अनीय प्रत्यय उसका भी गुण होता है. तव्य और अनीय के साथ उसको भी तव्य और अनीय के साथ कर्ता में तृतीया और कर्म में प्रथमा होगी. इनके रूप कर्म के अनुसार चलेंगे. जैसे मया भोजनम कर्तव्यम अथवा करणीयम. मया भोजनम करणीयम. दिस इज ऑल्सो ओके. द डिफरेंस इज दिस. इन वेद फॉर एनी ग्रेट विधि वाक्य इन कर्मकांड, इन ब्राह्मण, इन तैत्रीय ब्राह्मण, आरण्यक अथवा संहिता, when tavyat pratyay used, it is proper vidhi. You have to do, like in Taitriya Brahmana, Taitriya Aranyaka and all, there are examples how this thing has to be done. Karaniya is slightly informal. They will not use it has to be done. They will say in more of like Vidiling Vakya, for example. It is good if you do. Slightly informal. But Tavya Pratyay is more lot kind of thing. You have to do. Has to be done. This is the difference. But here there is difference is not given. Here they have just said कर्तव्य अनीय दोनों के वैसे ही रूप चलेंगे. रूप कर्म के अनुसार चलेंगे. जैसे मया भोजनम कर्तव्यम करणीयम वा त्वया पुस्तकानि पठितव्यानि पठनीयानि मया लेखः लेखनीयः अथवा लेखितव्यम. मया लेखः लेखितव्यम अथवा लेखनीयः. तव्य अनीय. But these are equivalent. You can use either. Yes. Only this is the thing. In Veda, when Arsha Prayoga is done, in that sense, Tavya will be used for, very direct kind of, it is very important. And Jnana also it is there. It is not to say Tavya does not find place in Jnana. In Brihadaranyaka, Tavya Pratyaya comes. But it is not in Vidhi aspect. Vidhi is for Karma Kanda. In Jnana Kanda, there is no Vidhi. नियम अशीति ही 80. भाववाचक शब्द बनाने के लिए धातु से ल्युट प्रत्यय होगा. सो त्रयः प्रत्ययानि सन्ति अद्यतन. ल्युट प्रत्यय. ल्युट का अन्न बचता है, गुण होता है. नपुंसकलिंग में ही रूप चलेगा. जैसे कृ इज कारणम करना. इसी प्रकार पठनम पढ़ना, गमनम जाना, लेखनम लिखना. वैसे भाषणम हरणम भरणम स्थानम दर्शनम वेदांत दर्शनम इज ल्युट प्रत्यय. ओके, तो 3 प्रत्ययस तव्य अनीय ल्युट. अर्लियर वी हैव सीन क्तवतु, शत्रुशाणच, तुमुन. पुनः क्तवतु शत्रुशाणच तुमुन. पुनः तम. No, tam is kta. Kta will be tam or shatru will be tam. Patitam, let's say. Patitaha, patitam. Ta, ktavatu, shatrushanaj, tumun. And we also saw kta. Yeah, and one more. Adaya, agamya. Swapratyaya we have seen. So 6 plus 3, 9 pratyayas are total we are seeing. This one. Okay. अस्तु. पुनः सन्धि. सन्धि अद्यतनः 2 सन्धिः.
संधि द्वे संधि स्तः प्रथमः हसि च विषयस्ति हसि च तो बुक् पुस्तके वयं पश्यामः प्रथमं हसि च अह को ओ हो जाता है, बाद में वर्ग के तृतीय चतुर्थ पंचम ह य व र ल वही हो तो जैसे रामः गच्छति इज रामो गच्छति. दिस इज द सेम, वेरी सिमिलर टू व्हाट वी ऑलरेडी सॉ लास्ट वीक इन अतो रोरप्लुतादप्लुते रामः गच्छति, एंड ऑल्सो अर्लियर वी हैड सीन एंगपदान्तावति सूत्र, अतो रोरप्लुतादप्लुते सूत्र, एंड हसि च सूत्र. दे आर ऑल सिमिलर. हसि च रामः गच्छति इति रामो गच्छति. एंगपदान्तावति द सेकंड वर्ड स्टार्टेड विथ स्वर vowel. हाँ, अवग्रह. Here no vowel, vyanjana and no avagraha. Because there was vowel, the avagraha came through atororaplutate. Here, if it is vyanjana, then there is no avagraha. It is just Ramo gacchati, Krishna vadati, Krishno vadati, kaha va, ko va, balah likati, balo likati, just. Iti var. Hasicha. Hasicha, Laghu Siddhanta Kaumudi eki. Tata, Shivo Vandyaha. That is all. Sometimes in Laghu Siddhanta Kaumudi, they will give example. This is an example. Shivo Vandyaha. Shivaha Vandyaha has become Shivo Vandyaha. That's it. So easy. There is nothing is there. We have a lot of this in Bridharanya Upanishad, right? Brahmanova and Rajova. Maharajova, Mahabrahmanova. Then this Balaka, matlab Kumarova. Yeah, that is all. Yes, Kumaraha va became Kumarova. Samyak, yes, exactly. That is okay. Then second, next sandhi of the day. It is difficult to say, but we will try. एतत्तदो सुलोपोकोरनन्यसमासे हलि एतत्तदोः सुलोपोकोरनन्यसमासे हलि. जी एतत्तदो सुलोपोकोरनन् समासे हलि. हाँ, वेल समझो, वेरी नाइस. हरि जी भवान है तो एतत्तदोः एतत्तदो सुलोपोकोरनन्यसमासे हलि. हाँ, कोरनन्यसमासे हलि. अवन्तिका जी भवतु, भवान् भवती वदतु. I'm not seeing office. Why? अच्छा, okay, no worries. See. Oh, no. I will read. हाँ. I could see. हाँ. एतद्दतो सुलोपोकोरन समासे हलि. हाँ, सम्यक. एतत्तदोः सुलोपोकोरनैः समासे हलि. So this is very simple. एषः और सः के विसर्ग का लोप हो जाता है, बाद में कोई व्यंजन हो तो. जैसे we know this already. सः पठति 61132 is एतत्तदोः. हसि च is 61114. So जैसे सः पठति स पठति, सः लिखति स लिखति, सः गच्छति स गच्छति, एषः गच्छति एषः गच्छति. तो only after एषः and सः, only for these two shabdas, one sutra. That was a big sutra, but it has only two things to do. That's all. Laghu Siddhanta Kaumudi. Okay, long one. Akakarayor एतत् तदोर यः सुः तस्य लोपो हलि न तु नै समासे. एष विष्णुः स शम्भुः अकोः किम् एष पुत्रः अनै समासे किम् असः शिवः हलि किम् एषोऽत्र. This is all unnecessary details. Main what we have to see is saha के बाद and एषः के बाद अगर व्यंजन हो तो विसर्ग लोप हो जाता है. That's it.
So we can even say right here Naya Samasam Vihaya, unless it is Naya Samasa, they will give Naya Samasa later. Anyatra ka kahara vihinat etad tad shabdat parasya etad atva tad eshaha saha shabdat parasya supratyaya. Supratyasya is visarga, right? Supratyaya vyanjane pare samhitayaha vishe lokah bhavati. That is simpler. Main thing, if we remember sutra, that is more than enough. Also a little difficult, this sutra, but that is great. पुनः वयम् अभ्यासः त्रिंशत् अन्तिम अभ्यासः प्रारम्भिकरचनानुकौमुदी रचनानुवादकौमुदी इति ग्रन्थस्य पेज नंबर 61 अभ्यास 30 उदाहरण वाक्य मुझे पुस्तक पढ़नी चाहिए मया पुस्तकं पठितव्यं पठनीयं वा तो along with प्रत्ययेन सह मुझे पुस्तकं पढ़नी चाहिए मया पुस्तकं हाँ तो मया भोजनं खादितव्यं सुंदर जी कहना तो ये भोजन खाना चाहिए हाँ बस हरि जी त्वया ग्रामः गन्तव्यः इंग्लिश अथवा हिंदी हरिजी भवान् वदतु त्वया ग्रामः गन्तव्यः तृतीय एकषष्टिः त्वया ग्रामं गन्तव्यः त्वया is thou shalt go to the ग्रामं हाँ it is good for you मतलब मुझे पढ़नी चाहिए it is good for me I have to do so you have to do to the ground it is like that you have to go to ground gantavya tavyat pratyaya and here pratyaya both are quite direct in this sense so you have to go thou shalt go to the ground you have to go to the ground because of the tvaya so where do we find that where it is going from uttama purusha to madhyama purusha to they have said तव्या और अनिय के साथ कर्ता में तृतीया और कर्म में प्रथमा सो whichever ग्रामः ग्रामः प्रथमा हाँ and त्वया is तृतीया one second हरि जी हाँ ग्रामः is प्रथमा हाँ त्वया is तृतीया हाँ so you follow प्रथमा कर्म yeah but गन्तव्यः will follow karma but this is खादितव्यं हाँ so there what are we applying that maya is भोजनं खादितव्यं ग्रामः गन्तव्यः whichever karma it is accordingly that linga will also come bhojanam napumsakalinga so खादितव्यं ग्रामः here they have taken as pullinga shabda ग्रामः you then it has become gantavya pustakam you see prathamah pustakam paditavyam pataniyam not pataniya or pataniya I think no, but so what I'm saying is that here we have taken bhojanam and napumsakalinga right now and then so where can I find the verbs where it can use tavyam and tavyaha and something is there a table like that or how will I know which verb to use there there is a table here also in this book also pratyaya vichara is there this is there after page number 130 or so we can see this tomorrow all this but in pratyaya vichara all these shabdas are given Hari ji what were you saying no it's okay thank you no what is it no I was saying that the sentence that I said is you are to be going to the village. Yes. Yeah, I just want to confirm that. It is correct. It is like a lot kind of rupa. Lot or strong vidhiling kind of rupa is tavyat. And here is like a weak vidhiling rupa. So you have to go to village. You have to be they are given in passive voice of course. Tvaya grama gantavya. Not tvam. Tvam gramam gacha. This will be lot. But they are given tvaya gramaha gantavya. You have to be going to the village. You are to be going to the village. Samya. You are to be going to the village. You must go. You should go. Clearly we can say you should go. The thing is, if you say you should go, it can be taken as active voice. And you can just say tvam gacha.
in lot, right? Yeah. But here we want in passive voice because Gantavya etc. will come in. You should be going. So Hariji, you are correct in this. Then Avantika ji, Chatvaraha, Tvaya Maya Asmabhihi va Karyam Karanyam Kartavyam va. Quite difficult है. हाँ, कर सकते हैं. तो यहाँ हाँ. तुम्हारे द्वारा, मेरे द्वारा, हाँ. अस्माभिः हमारे द्वारा हाँ. यह कार्य हाँ. करना हाँ. चाहिए क्या? चाहिए क्या वाह नहीं? है ना? वाह. वाह. अगर मैं और वाह यहाँ पे किम नहीं और अच्छा. और हाँ ये या ये वैसे तो त्वया तुम्हारे द्वारा अथवा मेरे द्वारा अथवा हमारे द्वारा ये कार्य हाँ. करना वैसे कर्तव्यम करना. सम्यक बहु सम्यक. इट इज नॉट डिफिकल्ट. सी यू डिड इट इजीली. सुंदर जी पंचम त्वया पुस्तकानि पठनीयानि. हाँ सी पुस्तकानि पठनीयानि. So you should be reading these books. हाँ सम्यक. You should be reading this book. By you these books should be read if it is clear. But passive voice. हाँ सम्यक. तुम्हारे द्वारा पुस्तक पढ़. हाँ. हरि जी भवान् वदतु ये अस्मिन् वने आम्राः दाडिमः इत्यादि. Asmin is in my Mane is actually forest or garden. Forest, but Asmin will be in this. Asmin is in this, huh? Yeah, Asmai Balakaya, they will say, right? Asmai Balakaya. So, sorry. Asmin Mane will be Saptami of Asmad Shabda. Yeah. You are correct, sorry. You are correct. In my one. So in Asmin In my my garden or forest, whatever you say. हाँ. Amraha mango trees are there. हाँ. All the other are all. They are all there. All are trees. All are trees. Cha Sandhi. Santi. Are unavailable. Are there. Are there. Are there. Are there. You are correct. If it is in this, it will be etasmin. Asmin, etasmin, and there that means tasmin. So asmin upavane. Asmin, what is this? Asmin vane. Sarve santi. Samyak, bahut samyak. Avantika ji, saptama. अस्मिन् उपवने हाँ. बगीचे में. हाँ. अस्मिन् मीन्स इस बगीचे में. नहीं, मेरे बगीचे में. अच्छा, अस्मिन् मेरे बगीचे में. हाँ. आम्राली बहुत सारे आम. हाँ. दाडिमानी बहुत सारे दाडिम. हाँ. द्राक्ष हाँ. और केले हाँ. है. हाँ, सम्यक. बस सिंपल. Asmin, even I am getting this doubt repeatedly because Asmin does not mean. Does not mean mine. This is not in Is Asmat this Shabda. Yushmat Shabda? No. See, it is there Asmin. in page 74. Page 74. Yeah. 34. No, but that is the Sankshipta Rupa. That is not. That will be like Sarvasmin. Yeah. Wैसे Okay. Asmin Shabda, Asmin will be is one में. Is one is correct. It will be like Etasmin. Yaha, I interpreted it as Yaha. It will be Etasmin. That is Asmin. You have to take as that. Sorry. Okay. Asmin means Asmin mane in this forest, because if it were mine, it will be Aya. Mama, right? In my forest will be Mama vane. So Asmin here will be in this. So Asmin upavane will be, Avantika ji was also correct. In this, is bagiche में ये सब फलानी संति. Okay. Final. सुंदर जी पंचमी षड्भी. So these are all Tritiya. हाँ. So therefore, Panchadiki. So
वाक्छात्रैः, so that also Tritiya. So therefore, हाँ. छात्रों के तु एतत् कार्यं करणीयं. So this should be done. This कार्यं should be done. सम्यक्. Through them. Through them. Through 5, 6, 7. Whatever. Through 5, through 6, whoever. सम्यक्. हाँ, हरि जी भवान वदतु संस्कृत बनाओ प्रथमः, मेरे लिए सवारी लाओ. दिस इज फॉर मी ब्रिंग vehicle. But you can use pratyaya in this. Or not, whichever. Vahanam anetu. So mama is for me it is what? Asmi. It will be mama krute yanam. Mama krute yanam anetu. For me you can do, but here for my sake, mere liye you can say mahyam or mama krute. Both are correct. Mahyam. Okay, you can say mahyam. There is nothing wrong with mahyam. But mama krite for my sake. Fourth vibhakti of. That is what Sundarji also saying. No? Yes, that is correct. That should be correct. Mahyam should be correct. Fourth vibhakti. Mahyam yanam anaya. But the references you see, they have given mere liye. So I am wondering if you have to use the pratyaya. Because if you have to use the pratyaya, then mama krite is better than mahyam. If you don't have to use pratyaya, just use lot lakara, then mahyam. So mahyam yanam anaya. This is correct. Atha mama krite yanam agachatavya. Anitavya. Krite. How do you use the word krite? What is For this reason. Bhojanasya krite will be to do bhojana. to do bhojana? Karanas, So mama krite, for me. yeah, for me to go there, to do this, because bhojanasya krite is for bhojanam. Mama krite. Mama krite yanam. हाँ. Yanam is not there ane. Yanam, you have to say, because if we are using tavyat pratyaya, then mama krite is better because it is passive, right? Active voice mahyam is better because mahyam is active. So either we can say mahyam yanam anaya. This is very active voice, simple. Or if we want to use pratyaya, then it's better to use mama krite Mama krite yanam yanam. anitavya. Ani shabda. Ni dhatu, right? This is. Yeah. So this will be anitavya. Matlab anitavyam athava aniyam. That is anitavyam is better. So mama krite if you want to use pratyaya. Mahyam if you want to use lot. Okay, I hope this is clear. अवंतिका जी ख मतलब सप्तम मुझे पुस्तक पढ़नी चाहिए. किं भवति? मुझे. हाँ मुझे. मह्यं पुस्तकं पठनीयं. पठनीयं सम्यक्, पुस्तकं सम्यक्. क्यों मह्यं? मुझे. तो मुझे विल बी तृतीया मया पुस्तकं पठनीयम् अथवा मया पुस्तकं पठितव्यं. सम्यक्. हाँ, दे हैव गिवन. अच्छा हाँ मया भोजनं खादितव्यम्. अच्छा मया पुस्तकं पठितव्यं. करेक्ट. उदाहरणवाक्य अस्ति. करेक्ट. सम्यक्. सुन्दरजी भवान् वदतु किं भवान् वदतु. Number 10. No, come on. 10 is so easy. You should laugh. 10 is simple. 14. Chaturdasha. Okay. So 14. So is sorry. Yeah. तुझे सत्य बोलना चाहिए. So त्वया सत्यम वदितव्यम अथवा वक्तव्यम अथवा बोलना चाहिए. We are going to विधिलिंग.
No, you can just say in with aniyar pratyaya. Because you said tvaya, Tvaya, tvaya satyam satyam, vaktaniyam, vadaniyam. vadaniyam. Vaktavyam vadaniyam. Vadaniyam, vadaniyah. Satyam. Satyam, so vadaniyam. Yes. Okay. Today is quite not very difficult. It is okay only. After this, all this is bagiche mein 5 aam 6 anar. This anybody can do. We don't have to do all this. Ashuddha vakya to shuddha vakya. Aham bhojanam khaditavyah. They are given aham bhojanam khaditavyam. Kintu bhojanam iti napumsakalinga asti. Khadaniyam khaditavyam khadaniyam iti api napumsakalinga bhavati. Bhavishyati अथवा सकार्यं कर्तव्यः तेन कार्यं कर्तव्यं तृतीया विभक्ति तेन कार्यं कर्तव्यं अभ्यास 2 ख को बहुवचन में बदला. हाँ, तो अवंतिका जी सप्तम मुझे पुस्तक पढ़नी चाहिए माया पुस्तकं पठनीयं पठितव्यम् अथवा पठनीयं नपुंसकलिंगे किं किं भवति नपुंसकलिंगे इति प्रयोगे अवंतिका जी भवती वदतु. एतत् पुस्तकं सप्तम मया पुस्तकं पठितव्यं. तो बहुवचने बहुवचने हाँ मया पुस्तकं हाँ पुस्तकानि पठितव्यं. हाँ मया बहुवचने किम् अस्ति प्रथमः मया इट इज देयर इन उदाहरणवाक्ये चत्वार फोर्थ त्वया मया आप ही बताए ना ये भी त्वया मया. हाँ फिर क्या है त्वया मया फिर फोर्थ उदाहरण वाक्य नंबर 4 यू नो त्वया मया अस्माभिः बहुवचने मया शब्द अस्माभिः अस्ति. तो अस्माभिः मया पुस्तकं पठितव्यं बहुवचने अस्माभिः पुस्तकानि पठितव्यानि अथवा पठनीयानि. हाँ अथवा पठनीयानि पुस्तकानि सो इट इज पठनीयानि पुस्तकं पठनीयं पुस्तकानि पठनीय सम्यक. फिर हरिजी भगवान वदतु अष्टम मुझे खाना खाना चाहिए. अच्छा आई हैव टू ईट फूड देयर मुझे खाना खाना चाहिए. माया भोजनं खादितव्यं. हाँ बहुवचने किमस्ति मया अस्माभिः भोजनानि खादितव्यानि. अस्माभिः भोजनानि खादितव्यानि. सम्यक. सुंदर जी चतुर्दश तुझे सत्य बोलना चाहिए बहुवचने. त्वया युष्माभिः सत्यम सम्यक. हाँ हाँ सत्यम वदितव्यानि वक्तव्यानि अथवा अनियर प्रत्यय. हाँ सम्यक वदनीयानि. हाँ बहु सम्यक. सत्यं वदितव्यानि वक्तव्यानि वदनीयानि. सम्यक. हाँ संधि करो इज सो सिंपल जस्ट वन वी विल सी इनफ. हरिजी शिष्यः गच्छति. शिष्यो गच्छति. सम्यक. भवानेव हरिजी सः किमस्ति सः पठति.
So sa patati. स पठति सम्यक् नाट् सो पठति अवन्तिका जी राम लिखति राम लिखति हाँ रामो लिखति सः लिखति तो लिखति स लिखति सः लिखति रामः के बाद अगर व्यंजन है तो रामो राइट कॉन्सोनेंट विल बिकम रामो गच्छति रामो लिखति इतिवत् अगर सः या एष शब्द आ रहे हैं तो विसर्ग लोप दैट्स ऑल और कुछ नहीं सो सः गच्छति विल बी स गच्छति एषः पठति एष पठति प्रश्नः अस्ति वा नास्ति ओके सुंदर जी बालका वदति सः पठति स पठति सम्यक् ओके कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा नास्ति चेत् हाँ प्रश्नः अस्ति वा नास्ति so in this way we are finished Praharambika Rachanamal Kaumudi in just over 1 month 38 sessions tomorrow will be number 38 we have finished it is still good to keep this book later on and also do the abhyasas that we didn't do because Sanskrit Banana we have just done 1 each or 2 each. It's a good book. Yeah, and it's good practice to use it and just make sentences. Tomorrow, one quick recap. पुनः वयं पश्यामः अन्तिम पुस्तके अन्तिमे सन्धि च प्रत्यय सन्धि विचारः अस्ति प्रत्यय विचारः अस्ति वयं तदपि पश्यामः पुनः श्वः ओके ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शान्तिः 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 शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ओम शान्तिः 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 ओम